Hello everyone. So today we have the mock interview. We will start with the mock interview with the introduction. So both of you give the introduction one by one. Upal, now you can give the first introduction. Just give the introduction once. Am I audible? Yeah, sir, you're audible. Can I? Yeah, you can give the introduction once. Hi, sir. This is Gautam. I'm from Andhra Pradesh. I have completed my master's in VLSI design and currently working as a design engineer. In which And company? I'm working in smart apps. Okay, fine. Okay. Upalana, just unmute yourself first. Hello, sir. Am I audible? Yes, audible now. Audible. Give the introduction once. Sir, I am Upalparna Datta, and I am currently pursuing my MTech in Electronics and Communication Engineering with a specialization in VLSI from IIT Delhi. And I also had a BTech in Electrical Engineering. During my academic journey, I have developed a strong foundation in analog CMOS design, digital VLSI design, RTL design, and RTL to GDS flow using both open source and cadence tool. And some of my key projects are pin protected locker system for RTL to GDS and sense amplifier and FIFO verification system. And my technical skill are comprehensive by my proficiency in Verilog, system Verilog, and my experience with tools such as Cadence, Virtuoso, Eldo, Vivado, and that's it. Thank you. Yeah. Keep it short only, like 1 minute or 2 minutes maximum, right? Okay. So let us start with the first question. Tell me the difference between latch and flip-flop. Sai, you Uh, can tell. Sai, latch and Uh, flip-flop. Latch is level triggered storage element, whereas flip-flop is a edge triggered storage element. In Hmm. short, Hmm. Yeah, give at least 4 points. okay. Mm, So Yeah. Meanwhile, you can no, tell. Yeah. Tell me. Continue. yeah. Um, Okay, you can tell. latch is faster and flip flop is slower than latch, and latch is flip flop is made of with the construction of latch, and latch is level trigger and flip flop is edge trigger, and flip flop is using for sequential circuit, and latch is for combinational circuit. Okay. 1 point is like incorrect. You can check it once. And also, which is faster? Which is faster? Uh, latch is faster. Then why we are using flip-flop in lot of circuits? Make some. Uh, latch is faster, but Yeah. a glitch is there in latch. Okay. Okay. Glitch. Okay. Just cross check it once. Why you prefer flip-flop over latch? Fine. I think because of the output is not reliable in latch, because if we take for example a JK flip-flop and let's say both inputs are high, it causes an like when both are high, out previous output is negated. Current output is negation of the previous output. So if we see for t on time for a certain amount of time, if it happens multiple amount of time, the prediction of the probability of getting a proper value is uh, very less. So to avoid that, we have constructed a master slave arrangement to act like a flip-flop. Basically, we are trying to reduce the t on time so that the transition happens within a limited amount of time. So that basic approach is flip-flop. Basically, flip-flop is made up of latches in this arrangement to avoid Okay. this error. Okay. Difference between combinational and sequential circuits. Combinational circuit, if we go by definition,
If a output depends upon current input, that's combinational. If an output depends upon present and past present inputs and past outputs, that is called flip-flop. Hmm. And Okay. go by examples, mux encoder decoder. These kind of things will be examples for combinational. And flip-flop, we can say state machines or flip-flops Okay. counters, sequential and synchronous counters, synchronous and synchronous counters. These are simple questions. Like you should Mm, know these yeah. things before interview, right? Because these points will be like you can take the advantage where you don't know the questions, right? Answers. These will be also obviously. Yeah, Upalna, you want to add something? Uh, uh, Combinational have no memory element and sequential have memory element. Hmm. For combinational, example are one point that combinational are marks, encoder, decoder, and sequential are flip-flop latches. And combinational uh, is does not depend on clock, and sequential is depend on clock. Okay. Give the example diagram, pen and Yes. paper on pen and paper, right? Uh, Like tell in me. Verilog, combinational is using assign statement, and sequential is using procedural statement like always block and non-blocking statement. Hmm. Tell me the difference between BJT and MOSFET and why we prefer BJT or MOSFET in our digital circuits. Which we prefer? Tell Uh, me the difference and then why we prefer MOSFET or BJT in our circuits. Which we prefer? BJT is faster and MOSFET is slower, but we use MOSFET because it MOSFET is gate control device and voltage control device, where BJT is current control device, and scaling in MOSFET is easier than BJT. And for high frequency, we use BJT, but for low frequency application, we use MOSFET. And BJT is high power. BJT power consumption is more than MOSFET, and MOSFET power consumption is low. For chip, we require less power consumption and less area consumption. For that, we use MOSFET for chip production. Okay. Okay. Yeah, you want to add something, Sai? Nothing. Everything were covered mostly. Okay. Tell me the difference between ripple carry adder and carry look ahead adder. CLA Uh, adder. Ripple carry adder is parallel adder, which add a previous bit, and carry look adder is a bit complex adder, which generate carry and add this by extra bit. Hmm. I can use diagram to explain. Yeah, you can make the diagram also. Just show me the diagram and tell me which is faster and why. Uh, Which is faster. Carry look adder is used for more bit, and it is faster. Just Should make I the diagram. explain with that? Sai, you want to add something? CLA Suggest us. adder and ripple carry adder. You know those terms? सुना है पहले कभी? Okay, tell me the one application of buffer. Hello, Sai. Sagar, you are there? Sagar, turn on the camera first. Yeah, turn on the camera fast. Sir, is it visible? Yeah, visible. Sir, this is ripple carry adder, parallel adder. Hmm. But this is incomplete, no? And this is incomplete. Carry look adder, I will. Okay, fine, fine, fine. Okay. Sagar, tell me the application of buffer. Tell me one application of buffer.
Buffers. Sir, sir, to compensate for hold time violation, Mm-hmm. whenever in a circuit, if there is any hold time variation, sir, buffer is used, and as well as in sir, when we can use buffer is also used in FIFOs, and so these two, as of now, I am remembering the third. Okay, tell me, MUX is a universal circuit or not? Yes, sir, MUX is a universal circuit. So how it is a universal circuit? Sir, because using MUX, we can make all other circuits using MUX as a basic element. Okay, okay. You can design 4 into 1 MUX using 2 into 1 MUX. Just do it fast with pen and paper. Yes, sir. Do it fast. Sir, I have to draw 4 cross 1 using 2 cross 1. Yes, yes, simple only. Okay. Uh, Meanwhile, Upalana will do XOR gate using MUX. XOR gate using 2 into 1 MUX. Sir, I have done. Sir, is it visible? थोड़ा पास लो. हाँ सिंपल है. हाँ ठीक है. करेक्ट. Tell me about race round condition. Sir, race around condition in sir flip flops, or race around condition in Verilog, or sir what? Digital. Digital. Sir, race around condition happens in when sir, where it is trying to make changes rather than it being first we have to sample. Before being sampled, the values are continuously changing. So for example, in when we can take a case of JK flip flop, wherein the when the inputs together given is 1 1, then at the output we can say that both of them race to bring out their own output, hence we use master slave configuration. Okay, okay. Make the diagram also in the interview, right? Or you can make Sir, it right now also. sir, master slave or sir master. How to resolve the race round condition? Okay, sir. Yeah, yeah. You can show. Sir, this is Yeah, XOR correct. gate using 2:1 max. Yeah, correct. It is. Uh, yeah. I said sorry, I got Uh, some network issue. yeah, it's okay. Sai, tell me what my testability. Tell me what is our testability. Trustability is like whenever from a clock domain from one clock domain to other domain, signal is getting transferred. The probability of not getting probability where the signal is not getting to either of the state, like 0 or 1. It's an unpredicted state or unsettled state, we can say. That is metastability. Yeah, make the diagram also in the exam. And Okay. yeah. So how to avoid the metastability? How to avoid the metastability? We got synchronizers for that. Like two flop synchronizers and toggle synchronizer mux and mux Blake pulse synchronizers, and so these are the stuff we use for mostly we use two flop synchronizers based on the complexity of the and speed of the circuit, or else we go for multi flop synchronizers like three flop synchron. Can you make the diagram of your synchronizer? Yeah, sure. Okay. Yeah, do it. Uh, Meanwhile, um, yeah, setup time and hold time. Just write the equation of setup time and hold time. People know. Equation time. Yeah. Show me. Sir, हाँ हाँ देखो. sir, ये master slave configuration. हाँ correct है. So here is our first is our master, then it's slave when on the negative edge of the clock. Tell me the difference between synchronous reset and asynchronous reset. Sir, synchronous reset is when all of the flip flops are being driven by a single clock and simultaneously they are being reset.
Whereas in asynchronous reset, the thing that happens is that the second or the forwarding following flip flops are being reset by the previous one, just just before their previous circuits. Make the code also, like so that we can distinguish in the code, right? There is some code, right? In the sense it will list difference in the code, right? In Verilog code. Yes, sir. Yes, sir. Sir. So write that syntax. Sir, I can write it here. So is it fine? दिख नहीं रहा यार, ब्लर आ रहा है उसका सही। पीछे करो, पीछे करो। कैमरा का क्वालिटी थोड़ा खराब है इसके शायद। Visible. Yeah. Should I mirror image? नहीं, this is no, this is fine. I'll try one more time. Just go backward, and stable. Go backward and stable. Be stable, be stable. Okay, fine. This is almost correct. Yeah. Okay, tell me about the CDC. What is CDC? Like clock domain crossing expansion. So it's like from one clock domain, like clock domain basically means it's a same different clock frequencies, or it can be from the same source or a different source, but it should not have same phase relation. So in one certain circuit, we have many clock domains. If from one clock domain to other clock domain, if we want to transfer data, we need the handling of data from one clock domain to other clock domain. That's basically a CDC. And main issue for clock during the clock domain crossing is the metastability. And as we discussed, that's the metastability. And based on the clock domain frequencies, let's say when source clock domain frequency is higher, and read the other clock B, whereas the other clock domain is very it's acting it's a low speed. We use synchronizers. If it is a sorry, we use a CDC FIFO, whereas the reverse case we use two flop synchronizers. Can you make the diagram also? Of Explain it. Like CDC and all. CDC, metastability. Yeah, sure. You have gone through it, right? Okay. Yeah, Sagar, show me the code once. Okay. हाँ. This is almost correct only, but this is incomplete. Yeah, Sagar, you have written it correct, but this is incomplete little bit. Yeah, fine. Okay. Meanwhile, will tell me about setup time and hold time. Setup time is the minimum time required after the clock edge has appeared to stable the data, and hold time is the minimum time to required before the clock edge to stable the data. And I can show by diagram also. Show it. Sagar, write the code of FIFO. FIFO. Okay, sir. Write in the chat book, not in the chat book. So pen and paper you can write. On pen and paper you can write. EDA compiler, both are fine. This is a diagram of setup time and hold time. Oh, good. Okay. Write the equation of the FIFO, empty, and full condition. So for FIFO empty condition,
if we calculate count equal to C log 2 of depth, then full condition is count equal to depth equal to full, and for empty condition count equal to 0 equal to empty. Write on the pen and paper also equation. Okay, ठीक है, got it. Is it visible? Waveform बनाया basically, right? Waveform. Yeah. So one is of clock A of the one domain and clock B of the other domain. So when you are Yeah. passing, if it is the signal is in the still in the setup window, so there is a probability of glitch. So I made one more pass it to one more flip flop so that it can get the some glitch free data. Mm. Yeah, this is correct. Okay. So Sai, you will tell me, we can reduce the or remove the CDC using CDC and metastability or using asynchronous FIFO also. Uh, Asynchronous before You have the idea? no. No idea. Okay, you have tell me the difference between asynchronous and synchronous FIFO. Just the basic difference you can tell. Okay. Synchronous FIFO is it has a clock, basically clock based FIFO. Whereas an synchronous without clock, it depends upon the previous or the corresponding flip-flops output. That's a basic difference. And Okay, fine. You know the code of dual port RAM? yeah, Just write it down. Yeah, Upalena, yeah, sure. Sir, Yeah, this is correct. This is correct. And I asked one question like asynchronous, synchronous difference. yes, FIFO. sir. Synchronous FIFO has two clock, like read operation and write operation have done with different clock. And asynchronous FIFO, read operation and write operation, both the operation will do by one clock only. Okay. You can write the code of this synchronous FIFO. Yes, sir. Okay, just write it down. Synchronous FIFO, the whole code, like Okay. empty condition, full Just condition, wait. Sagar is writing that code, no? Sagar is writing that code. Just wait. Hmm. Okay, tell me the difference between RAM and ROM. RAM, random access memory, and read-only memory. RAM is RAM is volatile and ROM is non-volatile. RAM is smaller and ROM is larger memory. Okay, That's just only I check it know. once. No problem. You know about barrel shifter? Barrel shifter, you know? No, sir, not really. Okay. Mire and More, you know? Yes, sir. Mire and just write the 5 difference on pen and paper and show me. Right? Okay. Sagar, अभी क्या status है? सर बन गया सर, बस फुल और सर एम्प्टी कंडीशन लिखना बाकी है, बाकी सब लिख दिया सर। लिख दो, सर वो दिख भी रहा लिखो। है हाँ, दिख रहा है। वो भी लिखो। थोड़ा दूर लिखो ताकि है ना कटिंग ना है। सर, अलग अलग ब्लॉक में लिखा है सर। यहाँ पे अच्छा रीसेट का कंडीशन लिखा है, यहाँ पे अलग कंडीशन लिखी है सर। जो हमारा ठीक रीड और राइट एनेबल है, तो डेटा कहाँ लिख रहा है, मेमोरी वगैरह, और ये साइड में रीसेट कंडीशन लिखा हुआ है, और उसके साइड में फीफो, फुल और एम्प्टी का लिखा हुआ है। ठीक है बिल्कुल। Sir, you are mute. Just read it once. Read your point once. Sir, melee depends on present and past input, and present input and output both, and Moore only present input. Melee less complex, Moore more complex. Melee did not need extra state. Moore need one extra state. Melee need less flip flop, and Moore need more flip flop. And Melee is slower and Moore is fast. You know about pull up and pull down network? Pull up and pull down? Yes, sir. In CMOS logic, there is pull up network and pull down network. Pull down network is made up of NMOS, and which is responsible for 0, and pull up network is made up of PMOS, which is responsible for drive 1. Yeah, make the diagram meanwhile.
Right. सर लिख दिया हाँ बताओ, दिखाओ। सर ये सर पहली कंडीशन है रीड एनेबल और राइट एनेबल की। इसमें सर व्हेन रीड एनेबल तो देन हम मेमोरी ऑफ दैट एड्रेस इज इक्वल टू डेटा इन डाल देते हैं। फिर नीचे सर जब हम रीड एनेबल करते हैं, सो व्हेन एवर वी रीड एनेबल देन मेमोरी फ्रॉम दैट एड्रेस इज टेकन आउट एज डेटा आउट। फिर उसके नीचे सर दिस इज माय फुल और एम्प्टी कंडीशंस। ठीक है, इसमें ठीक है, फुल और ठीक। फुल के लिए वी हैव व्हेन रीड पॉइंटर माइनस राइट पॉइंटर इज इक्वल टू साइज ऑफ आवर मेमोरी, एंड फॉर फुल व्हेन राइट पॉइंटर इज इक्वल टू रीड पॉइंटर, जब दोनों बराबर हो जाते हैं देन इट इज एम्प्टी। बैरल शिफ्टर के बारे में पता है तुमको? बैरल शिफ्टर। सर बैरल शिफ्टर सर एग्जैक्टली नहीं पता सर, लेकिन एक गैस ले सकता हूँ कि सर वो सिंपली वही है हमारा पी, 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 पीसो सर। एग्जैक्टली नहीं पता सर, शायद नहीं पहले। नहीं, एक बार चेक कर लेना बाद में, कोई नहीं। ठीक है Sir, अ, this is हम्म। VDD is connect with pulled up network, and output input, and input pull down network, which is connect with ground, and this is Yeah, just cross check it once also, like how to make a pull up and pull down network using CMOS, right? Just check it yes. after the meeting. So, Uh, so dual port. dual Uh, port दिखाओ। can I is it visible at all? देखिए सर वो बैकग्राउंड ब्लर करने के उसमें उन्होंने कर रखा है तो that's why Okay, नहीं। okay. I'll try to. बैकग्राउंड ब्लर किया हुआ है शायद। तो सागर बताओगे अभी। सेटअप एंड होल्ड टाइम वायलेशंस कंडीशन बताओ मेरे को कि वायलेशंस सेटअप टाइम और होल्ड टाइम के अलग अलग पेन एंड पेपर पे लिख लो, है ना, सारे पॉइंट्स। वायलेशंस कैसे रिमूव कर सकते हैं आप? ऑलमोस्ट करेक्ट है। और टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एंड सिंगल पोर्ट रैम एंड डुअल पोर्ट रैम के कोड में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड डुअल पोर्ट रैम? जस्ट गिव मी द आइडिया, जस्ट गिव मी द आइडिया। So in single port RAM, we'll be writing and reading from the same port, whereas or the same memory element. Whereas in dual port, we have this flexibility to you like we can write with 8 bits and we can read with different data bits, like let to 8 bit or we can get 16 bits data packed. Uh, like Okay, fine, fine. Okay, then fine. Yeah. So you can just make the design a mode 5 counter, mode 5 counter. okay. Yeah, just redesign it using pen and paper. Upalana, you just tell me the mm, difference between more and morelage, and then uh, should we prefer Mide or More in our designs? Like you have the idea? Murray is faster, but we need extra flip flop. So in terms of time, we can use Murray. In terms of area, we can use Mide. Okay, just make the diagram for the frequency divided by 3, f by 3, circuit for f by 3. Guru, हुआ? Sir, setup time violation occurs when the signal arrives after the band gap of that setup time, and that mainly हम उसको cover कर सकते हैं when we can increase the frequency of clock, and that particularly happens because when our TPD is greater than T clock, and for hold time it we can add more combinational logic or we can add buffers, and uh, also we can decrease the frequency of the clock. And what about whole time? Whole time का क्या सीन है? सर होल्ड टाइम में सर
सर होल टाइम का ये सर अच्छे से मेरे को देखो, ये पूछा ही जाएगा, ये पूछा ही जाएगा, और 6 पॉइंट्स होते हैं, है ना। उनका डायग्राम वगैरह भी होता है ना, तो अच्छे से सर एक तो इक्वेशन ही लिखो कि इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना। और फिर से बफर वगैरह होता है ना, नेगेटिव, ये सब होता वो है। बोला बोला सर मैंने तो बोला मैंने बफर्स भी बताए सर, और कॉम्बिनेशनल टीपीडी हम इंक्लूड कर सकते हैं एग्जैक्टली सर, वही भी सब। हम क्लॉक टू क्यू क्यू डिले भी बढ़ा सकते हैं, वो भी बोला सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आपको डिजाइन करना है सर्किट F/2.5, F डिवाइड बाय 2.5। फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2.5, 2.5 रेशियो, we have T flip flop, then we have clock. सही हुआ। Making equation. ओके फाइन। सर सर्किट बनाते टाइम सर फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर सीधा टी फ्लिप फ्लॉप लिख दूं? तो वेव फॉर्म से बनाओगे ना, वेव फॉर्म से। हाँ सर वेव फॉर्म से बनाऊंगा सर, लेकिन सर वो सीधा हम टी फ्लिप फ्लॉप से बना सकते हैं सर, वी कैन डायरेक्टली गिव इनपुट टू टी और वो जो देखो सर्किट। कैसे बनाना है, तो वो कैसे कैसे कोई सा फ्लिप फ्लॉप यूज कर लो। Sir, for uh, frequency divided by three counter, first we design a mod 3 counter with 2 flip flop. Then we add an extra flip flop and an extra OR gate to modify the waveform for F/3. शो मी द व्हाट हैव डन। Yes. सही हुआ। ओके, So this is फाइन फाइन। जस्ट क्रॉस चेक यूजिंग टेबल आल्सो, राइट, ट्रुथ टेबल, राइट। yes. ओके, ओके। You know how to make a combination circuit using like frequency multiplier 2f. Input is Frequency f and output is 2f. uh, input is F, output is 2F. Hmm. Frequency multiply. By adding the flip flop, like mod number multiplication is equal to frequency multiplication by serially adding the flip flop. No, no. Okay. Sagar will do it. Okay, meanwhile, tell me the difference between Johnson and ring counter. Write on paper. Johnson and ring counter Write on the points. by using diagram. Ha, diagram also. Okay, okay. What is the output? Okay, fine, fine. Uh-huh. What is the output of this? Out. Uh, I considered with D flip flop. So Mhm. first D flip flop, D out is connected from Q2 and Q 0 AND operation, and D1 is Q1 and Q2 and D2 is Q2 negation of Q2 and Q1 Q0 and Q2 bar Q1 Q 0. Okay, okay, okay. You know about barrel shifter? Barrel shifter के बारे में पता है? Nice. नहीं पता। Okay. Hmm. Okay, design sequential sequence detector one 1010 and 0101 both you have to detect in one Zero, circuit only. 1010 and 0101. Hmm.
In one circuit only, you have to detect both. Overlapping or non-overlapping? Overlapping, you can overlapping. Okay. But we have to detect both in one circuit only. Okay. Yeah. Sure. Sir, this direct feedback is connected in ring counter, and for Johnson current counter, this one from Q bar it is connected. Johnson counter is 2n number of state and ring counter is n number of state. More difference? कुछ गलत है उसमें, इनकम्प्लीट है अभी डायग्राम, एक बार क्रॉस चेक करना, इनकम्प्लीट है अभी थोड़ा. अभी मेरे को टेल मी दैट initialization. Yeah, maybe. Johnson counter is manual. Ring counter is manual initialization, and Johnson counter is self-starting, like from this. Tell me more difference. Tell me the more difference. Mod number of state 2n and n, and this speed, hardware. speed. Okay, just cross check it one, no problem. Application of ring counter. Application of ring counter. Ring counter single sequential for sequential circuit, single sequencing circuit. ADC, DAC में भी होता है. ADC, DAC, yes. Okay. Okay. You know about asynchronous FIFO, right? Asynchronous FIFO. You Yes, know sir. about asynchronous FIFO. Tell me Yes, why we use gray code counter instead of binary counters. Because for gray counter, it is 1 bit change, and it reduces the probability of CDC or metastability. Like 1 bit change in one clock, that reduce the probability, MTBF, everything. So the chance of metastability is reduced. Okay, fine. और ओके, और सागर हाँ दिखाओ अभी क्या कर रहे हो. सर ये सर डिवाइड बाई 2 तो बन गया था, लेकिन सर ये 2.5 का शायद नीचे गलत मैंने ये एग्जॉर्ब किया है या फिर ऐड किया है नीचे. तो एक बार गूगल बाद में कर लेना 2.5 का, है ना. और दूसरी बात 2F का पता है, 2F का कैसे बनेगा? सर 2F का, यस सर. कैसे बनेगा तो? सर सिंपल सर, वी एक्सॉर विद नेगेटिव ऑफ दैट जो हम इनपुट दे रहे हैं. तो एक सर मैं बार बना क्रॉस चेक कर लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बना लो अभी बनाना है तो. अदरवाइज क्रॉस चेक बाद में जरूर कर लेना. क्रॉस चेक नहीं करोगे तो अपना नुकसान करोगे, है ना, बाद में. NAND and not inputted AND gate. सर NAND gate and negative input and AND gate. You can make the diagram. You can make the diagram. NAND gate. तो उसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा ना सर्किट को, वेव फॉर्म वगैरह से. ये सर वो आपने बोला था कि एक बार डायग्राम बनाना. तो चलो सर ये ठीक ये ठीक है. बेसिक डायग्राम, जैसे यहाँ मेरे पे को ये तो बफर होता है, ये थोड़ा सा डिले होके हमारे पास नीचे है ना बफर है, तो ये थोड़ा सा डिले होके आता है हमारे पास तो क्लॉक 2F आ में. जाएगा इससे. क्या सर? 2F आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इससे. हाँ सर 2F आती है. ओके. ये तो सर Sorry, sir. The question is, what is the question? NAND gate and negative input AND gate. Okay. So asynchronous FIFO डिजाइन किया है सागर? asynchronous FIFO डिजाइन किया है? नहीं सर, ये सिंक्रोनस नहीं किया था, सिंक्रोनस FIFO डिजाइन किया हाँ, था वो सर. मैं asynchronous का बेसिक्स पता है? सर बेसिक्स सर यही है कि जो 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 क्लॉक है वो क्लॉक. डायग्राम डायग्राम पता है काउंटर्स वाला नहीं सर नहीं पता. डायग्राम. ओके ओके, एक बार देख लेना क्योंकि बेसिक तो पूछ के आएगा एटलीस्ट, है ना. FIFO.
from truth table we can make difference like Meet 2-3 applications of Mux. Sagar. 2-3 applications. Sir, sir, Mux, sir, we use in while in protocols while we used to give the address or to data into any interface. And then second, we use Mux in sir when we design. Sir, flip-flops, use of design of flip-flops in synthesis in Verilog codes. We use it using the mux and then uh, एक बार चेक कर लेना, कोई नहीं, बाद में चेक कर लेना. sir CAM मेमोरी पता है? CAM मेमोरी पता है? कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी नहीं पता? नहीं सर. ओके ओके ओके. रेज एंड वायर में डिफरेंस लिख दो इतने, फिर रेज एंड वायर में. sir Resin, this NAND A dot B bar and negative input and A bar dot B, and this is universal gate, this is not universal gate. दोनों कोई नहीं, गलत आउटपुट. ठीक है, चलो ठीक है. वैसे क्वेश्चन गलत समझा. वी हैव द बोथ इनपुट नेगेटिव. वी हैव A bar B bar AND gate. So output is A bar dot B bar, right? That is no problem. And NAND gate is A bar A dot AB whole bar, right? That is the difference. In the truth table will be different. Okay, so the last bit will be 1. Okay, tell me the difference between synchronous and asynchronous counters. Synchronous counter is does not depend on Then write on a reset. pen paper. Write on pen and paper. sir, reg is 1-bit data type, whereas wire can be defined on its own. Reg can contain the values 0, 1, x, and z, and it is always defined in the initial or always block, whereas wire can be designed outside the initial and always block of the code. And uh, it is done on continuous statement. Wire cannot store a particular value, rather than it is driven continuously by the inputs. ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना सारे पॉइंट्स ये वाले. क्योंकि ये पूछा ही जाएगा, ये तो 100% पूछा जाता है. ब्लॉगिंग एंड नॉन ब्लॉगिंग का डिफरेंस बता दो और कोड भी लिख दो एक एग्जांपल के साथ. एक Okay, sir. एग्जांपल के साथ तो व्हाट्सएप इस पे डिफरेंस लिखना है या फिर एग्जांपल भी लिखना है, दोनों का. सही हुआ अभी. making state diagram. ओके यार, do it, no problem. Sir, synchronous counter same clock, asynchronous counter different clock. Synchronous counter faster, asynchronous counter slower. Synchronous counter more complex, asynchronous counter simple. Synchronous propagation delay minimum, asynchronous propagation delay more. And synchronous counter is a high speed application and asynchronous counter is low speed application. डायग्राम नहीं बनाया अभी. डायग्राम हाँ डायग्राम है. एक छोटा सा डायग्राम बना दो. That this is diagram like synchronous same clock, asynchronous clock from output of different.
Tell me the difference, different type of data types in Verilog. Just the name and one line description. Sir, where register and int and for system Verilog, additional data types are there Only like Verilog. Only Verilog. Only Verilog. register where int long double Okay. Net is there. net is there. What do you mean by net? Net क्या होता है? Net has physical instances and it is physical connection. It has net. What is net? Real is also there and time is also there, right? These are Yes, also sir. data types, right? Yes, sir. Okay, just check it once. Mm. Yeah, sure. So now let's say input is 10101001. So from state 1, so as 1, it will go to 0, this one, the state to the next state, and if it is 0, go to the next state with output 0, and next state 1. So if input is 1, it will go to next state with output 0, and later 1010, we got the condition, it will be output 1. This was the first one. Let's take the with overlapping. We had other one 010 also. Let's say initially if it is not 0, if it is 0, we'll move to stage 2. So then 0, then 1 to stage 3, then 0 here. Here I'm getting 1 again. So and 1 it goes to the next state. So 0 0. If we take this complete condition 0 1 0 1, we'll get 2 times high. That's the only scenario I was figuring out. But rest we can overlap. But if it is not overlapping, we can make it 2 different states and we can compare. As it is overlapping, we are getting twice. Complete actually. It is incomplete. Yeah. You can make it later also and just Google it also. Like you will get some idea. Right? Okay. Because these sometimes they ask, right? Sometimes they Mm. ask these questions also. Okay. Sir, I have written in the chat box, sir. ठीक ठीक है ये एग्जांपल तो सही है एक बार मेरे को डेफिनेशन टाइप से और बता दो Sir, definition types in non-blocking, where what happens is really that the continuous assignment without executing first one, it directly jumps to the next statement and starts executing it. For whereas in blocking, first the statement that we are on that completes that assign if it is an assignment, if it is a calculation, if it is a ternary equation, first it happens, then it will be going to the next statement, and hence it will be executing the further statements. Whereas in non-blocking, it will be directly jumping to the next statements without any concern of the first statement being completed or not completed. okay fine ठीक है write the code of Verilog to swap two register values with and without temporary registers सिंपल है बस कोड लिखना है ऊपर ना विंडो why we use system Verilog and why we prefer UVM over system Verilog. System Verilog have more function of OOPS concept like inheritance polymorphism, and for UVM it is based on system Verilog. It is dependent on system Verilog UVM, and UVM is basically a process by which we can cover functional verification also, and it is reusable and which is very more usable. flexible. UVM is reusable. OVM, which one is previous version is not reused. System And, Verilog is also reusable. Yes, sir. System Verilog is also So reusable. why we are using UVM over system Verilog? UVM over system Verilog. Yeah, why we prefer But like because by UVM we can cover functional coverage. okay. Libraries are there, na? Inbuilt Libraries are there, yes. Because of that. Yes. Okay. In system Verilog we depend on module, but in
UVM we can use Okay, like write the architecture of test bench architecture of system value. And Sai, you can write the test bench architecture of UVM. Okay. Sir, I test have bench. written the code, sir. What? Sir, I have सागर written the code. अच्छा अच्छा मैं देखता हूँ. ठीक है, हाँ ठीक है. हम्म, तो सागर प्रोजेक्ट स्कूल कौन से किए आप? Sir, projects, sir, FIFO, 1x3 router and sir, एक राउंड रोबिन राउंड राउंड रोबिन आर्बिटर, सर. आर्बिट्रेटर. उसका कोड लिख सकते हो राउंड राउंड रोबिन का, या पहले बता दो फिर कोड पे आता है. वो क्या होता है क्या उसमें? सर उसमें सर ये होता है कि जैसे हमारे पास जो भी थ्रेड्स हैं उनको हम रिपीटेड टाइम दे रहे हैं कि अगर उसका बर्स्ट टाइम अगर 10 सेकेंड्स है, रैदर देन वो पूरे 10 सेकेंड्स उसकी उसी को दे दें, हम उसको 5-5-5-5 में करते हैं और वो रिपीट होता रहता है अनटिल एंड अनलेस जब तक वो पूरा थ्रेड कंप्लीट नहीं हो जाता. सो दैट इज राउंड रॉबिन. सर उसका सर कोड तो एग्जैक्टली अभी याद नहीं क्योंकि काफी दिन हो गए देखे. कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं. एपीबी क्या है एपीबी? सर वो एडवांस पेरिफेरल बस. हाँ सर उसका सर दैट इज अ प्रोटोकॉल दैट इज ऑफ इट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ आम्बा एंड चलो अम्बा ब्रिज बना दो. अम्बा अम्बा का डायग्राम बना सकते हो. अम्बा ब्रिज सर अभी बना याद है तो बना सकते हो. Sir, this scoreboard which is connected through monitor with through agent with monitor, and this is driver and sequencer, and driver is and monitor is connected to DUT design and test through interface. इनकम्प्लीट नहीं है ये, इनकम्प्लीट है ना? Sir, the incomplete in the sense environment and test and top module will be there. Like where we are comparing. Okay. Comparing in monitor and scoreboard Okay. Okay. Just cross check it through once. agent. Because अभी इनकम्प्लीट है थोड़ा सा, है ना, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना. I can environment and top module and test module will be there. Something is missing, right? One or two blocks are missing, right? You can cross check it later. And it is a virtual or non-virtual interface. Virtual interface. So what do you mean by virtual interface, and why we are using it? Virtual interface in the sense we applied test vector to the test bench by generating sequencer, so it is virtual. Okay. Okay. Just cross check it also, like why we called it as a virtual interface, right? Okay. Okay, you can write the. Okay. What are the projects you have done? Like CMOS you have done? Like Yes, layout sir. part? I have done NAND gate and domino logic, and for an RTL to GDS flow for pin protected locker system, and for I have done ACP and HP port comparison, Hmm. and Okay, tell me, write the steps of RTL to GDS. Write the steps name. RTL to should I write? Yeah, right. So, inside top we have interface and DUT, and test we have environment inside that agent. In the agent driver, which will be driving signals to the DUT through interface or virtual signals, and the monitor which also gets the data based on the control signal that we monitor, and through the interface again. Then we will be using FIFOs or some buffers to store the driven data and get the monitor data and compare in the scoreboard.
few blocks are missing still in this, right? And also we use two agent, right? Active and passive agent, right? Yeah. So do you know the difference between active and passive agent and why we call it as active and passive? No, no, we don't know that much difference. I'm not. So Yes. this diagram is superficial only. Like there are Okay. like 4 5 blocks are missing right now. Okay, just Okay. go through it once. On our YouTube channel also 2 hour videos there, right? You can go through that video also. Okay. We have tell every step. So because if they ask now, they will ask the close question obviously, right? Okay. I have good. Mm. Other blocks in sense is components The or the flow is fine, but few blocks are missing. Like they will ask about the like transactions or outputs also, right? sequencer and no. Ports also, like port, they will ask about ports also, right? Okay. Different analysis port and all. No. Okay, you can tell me the difference between fork and join, and fork join and fork join. Any all those difference you can tell. Foregoing basically used for parallel process. If we Hmm. have if we want to use drive two things in parallel, we'll be using fork and join, and it based on the priority. Like let's say one event has already occurred, got completed within 2 nanoseconds, and other take 3 nanoseconds. We can stop in between. Let's say using fork join none. So either one, whichever completed first, that till then the process will be stopped. Uh, uh, and fork join all I think we wait for the complete end. Let's say when 1 2 and 1 4, we wait for 4 nanoseconds. You can explain using diagram also. Okay. A small diagram. No. Oh, Okay, you can try it if you have Sir, diagram. Yeah. this is first RTL, then LEC, then synthesis, DFT, STA, and after STA, we shift to PD. PD first step is floor planning, power planning, placement, CTS, routing, global routing, detailed routing, and then verification like DRC, LVS, ECO, and then GDS file and tape out. And STA and LEC will be performed in different stages. What is LEC? What is LEC? Logical equivalence checking, like Oh, what? formal verification. In that, we check the function is correct or not after every stage. What is ECU? ECU? ECO, engineering change of order. If there is any changes or any functional change or anything we need to fix, like for setup time fix or hold time fix, we can perform ECO by adding buffer or something metal field. After ST, what you have written after ST? PD, physical design. Above ST is DFT, DFT. Okay, fine, fine. canceling. Okay, fine. Okay, fine. Tell me the difference between function and code coverage. You can write. Functional code coverage. हाँ, Code coverage. you Oh, can write. You can write. You can write. हाँ सागर अभी क्या कोई क्वेश्चन दिया था? हाँ सर, ये सर ये आपने आंबा का दिया था सर, ये आई थिंक ये गलत है। फेस ही नहीं दिख रहा बैकग्राउंड की वजह से कोई दिख ही नहीं रहा। एक कोई नहीं, सेकंड। चलो कोई नहीं, एक बार चेक कर लेना। और भी प्रोजेक्ट्स कम है ना, तो प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा फोकस करना है। अम्बा I2CS पे है ना। अभी फीफो तो बेसिक है, एसिंक्रोनस एटलीस्ट उसका नॉलेज तो होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट्स में भी लाइक करो, थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स पार्ट पे फोकस करो। और सिस्टम वाला यूवीएम कंप्लीट हो गया? हाँ सर, यूवीएम हो गया सर, लेकिन अब 1 1.5 2 महीना हो गया सर, तो मतलब थोड़ा सा टच नहीं है अभी भी। एक्सेस ले लो, रिवीजन करो, है ना। अदरवाइज एक फैकल्टी की और है मेरे पास, पुरानी है ये, तो उसका भी एक्सेस दिलवा देंगे। तो एक बार बोल देना व्हाट्सएप पे, शायद दिया भी था पहले, आई गेस दिया था, राइट? रिसर्शन वगैरह के लिए ड्राइव पे हाँ कुछ। सर, हाँ सर, वो नहीं करा है सर, वो नहीं करा। पर बाकी सर आप सिस्टम वेरिलॉग से सर पूछ सकते हैं सर। यूवीएम का भी कर लो, यूवीएम कर लो, और प्रोटोकॉल बेस्ड प्रोजेक्ट कर लो, UART I2CS PI, है ना। ठीक है सर। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। तो ये वाली बात है, क्योंकि रिज्यूमे में तो लिखा हुआ है ना तुमने ये सब।
हाँ सर, कर रखा है सर यू आर्ट, लेकिन सर अभी एग्जैक्टली याद नहीं करा सर, एक कल बार शाम को। रिवीजन कर लो, एक्सेस लेके एक बार। कोई एग्जाम दिया था रिसेंटली अभी? नहीं सर, अभी रिसेंटली तो नहीं दिया था सर, लेकिन कैडेंस का दिया था, लेकिन वो सर प्रोफाइल अलग थी। ओके वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोफाइल थी। ओके ओके ओके। और कोई सा इंटरव्यू दिया कंपनी में किसी? सर एक सर्विस बेस में दिया था सर, वो वैसे ऑफर कर रहे हैं कि आप पहले 6-7 महीने हमारे पास ट्रेनिंग करो, फिर 2 साल का आपका अकाउंट बन जाएगा। कैडेंस और स्नॉप्स में ट्राई करो, हो जाएगा। थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा। सर सर function coverage is design function test, and code coverage is RTL code structure testing, and function coverage is user defined like cover group or cover point, and code coverage is by tool generate, and function coverage will cover the condition verification, but code coverage will cover the code execution verification. ओके ओके। देयर इज सब कैटेगरी आल्सो इन इनलाइन कवरेज एंड ऑल, यू नो। Yes, sir. Like code coverage, we also check toggle coverage and branch coverage. All the line of the code is properly executed or not. But function coverage, we check the input and output relationship, like which output we need to generate this that will be generated properly or not. ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी 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 एंड करते हैं, कल सेकंड राउंड लेंगे, है ना। तो सागर एक बार प्रोजेक्ट्स पे स्टार्ट कर दो रिवीजन करना। एक्सेस नहीं है तो एक्सेस ले लो, उसका कोई इशू नहीं है, है ना। एक्सेस तो ठीक है है। या नहीं है अभी? एक्सेस है है या सर, नहीं है है? सर। है तो रिवीजन करो यार अच्छे से, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के बिना कंपनी मानेगी नहीं, बोला भी गया तो, है ना। सर जैसे जितने सर, और जैसे पूछा था सर दोस्तों से, और जो मतलब सीनियर्स थे सर, वो लोग थोड़े से बोलते हैं कि ये तो जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सब तो थोड़ा ना आउटडेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़े से अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको गिटहब पे मिलेंगे, वो लोग तो ये बोल रहे हैं। और सर गिटहब पे समझ ही कौन नहीं सा आता वो प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट? कौन सा उनसे पूछो ना, कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए? रिक्स रिक्स चाहिए? सर एक बार देख के बता देता हूँ मैं कौन कौन से एक बार प्रोजेक्ट्स। पूछ लो कौन सा प्रोजेक्ट है, तो हम करवा देंगे वो। अदरवाइज सफिशिएंट है जो हमने करा रखा है, अम्बा, यू आर, टाई टू सी, एस पी आई, है ना। तो ये तो सफिशिएंट है, इनसे बोला जाता है ना। फिर भी एक बार पूछ लो मेरे को, प्रोजेक्ट्स बता दो कि ये ऐड ऐड कराने हैं, करवा देंगे वो, है ना। सर वो वही है सर, एक उन्होंने डाल रखे हैं, उन्होंने AXI और इन सब के प्रोटोकॉल्स के डाल रखे हैं। ये एक जगह तो डाले हुआ है हमने, एक जगह पूरा अभी रिसेंटली अंकित सर ने कवर किया है ना। एक महीने सर से वही तो चल रहा है अम्बा, पूरा पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, पूरे पूरे डिटेल में कोड के साथ। सर DMA अभी अब विद AXI इंटरफेस। ये एग्जैक्ट पूरा पढ़ाया हुआ है रिसेंटली, है ना। ऊपर ना तुमने अटेंड किया था रिसेंटली हाँ अंकित सर क्लासेस? सर, मेरा यही सब प्रोजेक्ट चल रहा है, मेरा DMA और ILA का प्रोजेक्ट एंड सब तो कुछ। ये तो अच्छे से, बहुत अच्छे से कवर किया है। तो लाइव अटेंड करी नहीं थी शायद तुमने, तो अभी अपलोड करवा देंगे, थोड़े कुछ दिन लगेंगे, छः छः सात सर दिन ये सब प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो गया है ठीक है। सर। DMA ILA और सारे ब्लॉक IP ब्लॉक क्रिएशन सब, हम्म। ACP HP पोर्ट और GP पोर्ट सब प्रोजेक्ट हो गया है। ठीक है, तो एक बार वही है, लिंक्डइन पे अप्लाई करो, और क्या सर है। लिंक्डइन पे सर रिप्लाई नहीं आते, अप्लाई कर करके थक चुकी हूँ। सर वही सेम हियर सर, वहीं से सर होगा, सेम हियर, वहीं सेम से। हियर सर। सर रेफरल के थ्रू भी अप्लाई कर रही हूँ तब भी नहीं आ रहे। सर मैसेज के होगा ही तो रिप्लाई वहीं नहीं आ से। रही सर, रेफरल तो दूर की बात है सर, मैसेज के ही रिप्लाई नहीं आते। वो तो है ही भाई, वही टारगेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि रास्ता ही वही है ना। हम भी वहीं से अप्लाई करते हैं, हम भी वहीं से अप्लाई करते हैं। अभी तो क्योंकि इंटरनल ओपनिंग आ भी नहीं रही, पहले तो इंटेल वगैरह में आती रहती थी, अभी तो नहीं आ रही। आएगी सर तो मैं बताता हूँ वैसे। अभी ये सागर, तुमको देखो प्रोजेक्ट्स वाला पार्ट का स्ट्रॉन्ग कर लो थोड़ा सा, है ना। और अभी अपलोड करवा देंगे 4-5 दिन में अम्बा का पूरा, है ना। तो अदरवाइज डला पड़ा है पहले भी अम्बा, ओल्ड अम्बा यूं पड़ा है, अम्बा एडवांस का डलेगा अभी, है ना। तो वो बहुत अच्छे से कर लो, है ना। और बाकी साइड में अप्लाई अप्लाई करते रहो। और सर गेट आपने एग्जाम दिया था? गेट एग्जाम दिया गेट था? सर गेट का एग्जाम नहीं दिया, वही तो दिक्कत हो गई सर। अब तो ट्रिपल मतलब आईटी ये दिल्ली नहीं। का ट्रिपल आईटी दिल्ली का फॉर्म निकला हुआ है शायद, उसका भर दो। ट्रिपल आई विदाउट टी। गेट, विदाउट गेट है। बिट्स का भी बिट्स का भी पता नहीं, बिट्स का भी आईटी का भी है। सर बिट्स का है सर, वो मई में होता है, वो बिट्स HD। बिट्स का भर देना, बिट्स का तो अच्छा प्लेसमेंट जा रहा है हैदराबाद में स्पेशली।
बहुत अच्छे प्लेसमेंट जा रहा है वहाँ पे। सर वो जो प्रीवियस सेमी का आपने आज भेजा है उसका कुछ रेफरल मिल सकता है? कौन सी कंपनी का भेजा? इनसेमी का? आज प्रीवियस सेमी का। परवे सेमी का? हाँ हाँ। हाँ, वो रेफरल की तो आईडी दिया है, रेफरल की आईडी दी है मैंने। सर फिर वो सब आईडी में भी रिप्लाई नहीं आते हैं। उनका वो है ना एएमएस वेरिफिकेशन का प्रोफाइल, हाँ तो फिर सर भी मेरा उन्होंने मांगा है। सर मेरा एनालॉग और मिक्स सिग्नल पे भी प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगर रिप्लाई नहीं आता तो मैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, फिर और क्या है ना। मंडे तक अच्छा वेट कर सर लो, थैंक मंडे यू। ट्यूसडे तक। ठीक है, ठीक चलो सर सर तो फिर मैं एनालॉग और मिक्स सिग्नल प्रोजेक्ट डाल के उसमें अप्लाई करूँ ना? हाँ, एक बार हेडिंग में लिख डिजिटल और देना। एनालॉग दोनों प्रोजेक्ट डाल के। मेरा सेंस एम्पलीफायर और ओटीए इन सब प्रोजेक्ट है। हाँ सर सागर बताओ। हाँ बोलो। सर जैसे मतलब मैं जैसे जैसे ही लिंक्डइन खोल रहे हैं सर सब लोगों का, उसमें तो जैसे ज़्यादातर लोगों का ये आता है कि वी हैव बीन लेड ऑफ फ्रॉम सेमीकंडक्टर वगैरह। तो सर ज़्यादातर ऐसे मतलब इतना टफ माहौल में सर विदाउट कॉलेज प्लेसमेंट हो जाएगा या फिर बेटर है कि एम टेक ले? देखो सर एमटेक सर मिल रहा एम है आई ना, ऑडिबल? एमटेक मिल रहा है तो करो ऑब्वियसली, है ना। एमटेक सर मिल एम आई रहा है तो ऑडिबल? करो, है ना, लेकिन अच्छे कॉलेज से करना, ऐसे नहीं कि लोकल कॉलेज से कर ले। लोकल कॉलेज से कर ले तो बेकार है। बिट्स से करोगे, बिट्स क्या आउटपुट आएगा, है ना। या फिर आईआईटी से, ट्रिपल आईटी दिल्ली से भी करोगे तो आउटपुट आएगा अच्छा खासा वहां से भी, है ना। तो लेकिन वो है कि अच्छे कॉलेज से करना है, एमटेक करना है तो। एमटेक से वो है कि आसानी से कंपनी रीच आउट कर जाती है, बस ये वाली फायदा। नॉलेज का तो नॉलेज तो सेम ही है। सर एम आई हाँ ऑडिबल? सही। I या सही reconnected. सही, टेल मी टेल मी। I connected my mobile. Uh, या दिस इज फाइन। so हाँ so हाँ। can you join any हम्म। and none. हाँ ठीक है, Uh, करेक्ट। दिस इज करेक्ट। सही है। एंड ऑल्सो जस्ट गो थ्रू द बेसिक्स, राइट। so, Go through the basics of digital Verilog because they will ask the basics also in the interview, right? so, So we are ending the meeting right now. So we will take the Verilog interview next time, fine? Verilog completely on Verilog, right? okay. Okay then. Thank सर you. सिस्टम वेरीलॉग पे नहीं रहोगे सर? सिस्टम वेरीलॉग क्योंकि उसके बाद आएंगे सिस्टम वेलोग पे, उसके बाद सिस्टम वेलोग पे आएंगे, है ना। सिस्टम वेलोग को बेसिक्स भी कवर कर लेंगे उस पे नेक्स्ट टाइम पे। ओके फाइन, थैंक यू।